build an ecosystem around that in order to encourage quality assurance, improve quality, improve competition. And very insightful. Thank you very much for sharing this very interesting example. And so now I would like to invite Ms. Humay Jaz. Welcome to Jumpstart Pakistan and the Venture and Capital Conference. Just as Zishan did, we would like you to, just shed some light on, just a brief introduction about yourself, your journey, what you do, and your insights on today's topic. Thank you. Over to you. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. My name is Huma Ijaz, and I had been working for more than 14 years now in senior financial and managerial positions for finance and accounts. My last job was as a CFO when I finally decided that I won't go back to job again, and I started my own consulting firm. I had been a freelance consultant for last 4 years, and I've been working with several startups, tech startups mainly, and also some women-owned businesses as well. The ones जो घर से काम कर रही होती हैं छोटा मोटा काम. So I actually found out a gap कि जी इनको कैसे connect किया जाए टेक्नोलॉजी के साथ और सेल्स कैसे बढ़ाई जाए. So जैसे टेक स्टार्टअप्स की मैंने बात की तो I had been engaged with the टेलीमेडिसिन के कुछ स्टार्टअप्स थे, उसके अलावा रिटेल के, ग्रोसरी डिलीवरी के, इसके अलावा आई एम वर्किंग फुल फ्लेज as a tech startup consultant for Pakistan, maybe in Saudi Arabia and some US के startups भी I'm working with because technology more or less सारी same है. So I see a lot of potential in Pakistan और बहुत ज़्यादा लोग willing होते हैं कि जी हम पाकिस्तान से development करवाना चाह रहे हैं because it's less costly and more quality ज़्यादा बेहतर होती है. और तीसरी चीज़ आपने कहा आज के टॉपिक के बारे में. सो येस, एज आई वर्क एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मेरा रोल स्टार्ट होता है व्हेन यू जस्ट हैव एन आइडिया फॉर योर बिजनेस और यू हैव ऑलरेडी बिल्ड अ प्रोडक्ट. दोनों स्टेजेस पे मेरा रोल स्टार्ट होता है. सो व्हाट आई टेल स्टार्टअप्स इज हाउ यू कैन एक्चुअली कनेक्ट डॉट्स, कहाँ पे आप सिनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आप किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपने इंपॉर्टेंट कंसिडर करने होते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन एवर आई डिलीवर अ फाइनेंशियल मॉडल, उसमें मैं बिजनेस वैल्यूएशन करके रेवेन्यू स्ट्रीम्स आइडेंटिफाई करके जब मैं स्टार्टअप्स को देती हूँ तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक गैंट चार्ट होता है जिसमें मैं सारी चीज़ों को उनको बताती हूँ कि आपने लिस्ट करना है, आपने कौन कौन से टास्क कौन कौन से टाइम पे परफॉर्म करने हैं और आपने उसको किस टाइम पे कनेक्ट करना है. सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली कनेक्ट द डॉट्स. और आपका बिजनेस बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका स्टार्टअप्स की सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आपने डॉट्स कैसे कनेक्ट किए हैं. ये एग्जैक्टली वही बात है जैसे हम बचपन में डॉटेड लाइंस 1 2 3 4 5 करके एक डायनासोर या कोई एक एनिमल बनाते थे या कुछ भी क्रिएट करते थे. सो ऑल वी हैव टू डू इज एज स्टार्टअप्स वी हैव टू एक्चुअली पुट द नंबर कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, कौन सी लाइन कहाँ पे कनेक्ट करनी है. Thank you very much for this. Sharing your insight on how we can actually take this step-by-step guide, especially for tech startups, and you've been helping those tech startups. So I think your input and your knowledge would be very helpful to all our audience who are into this space or at this stage, and they would like to take further guidance from you. So now moving on to Khurram Zubairi Saab, who is the founder who put the first dot for Jumpstart Pakistan, and we are just trying to help him out. I don't know if we have done any bit on connecting those dots, but then this journey started in 2014. Now we're sitting in 2020. So the dots between 2014 and 2020, maybe I would like to ask Khurram Saab to shed some light on that, and how do you see connecting and exploring those dots? I think, yeah, very, very variable, last bit of points that you mentioned, that we got to appreciate what we know and what we don't know. Once we realize that, only then it's a open ground that we could collaborate on. That your expertise, the expertise of the people in front of you, and you see a common ground to collaborate in order to grow. So I think my next question would be, I think we're just about to end our session, and then we'll open it for Q&A. So just before we end, maybe to Ms. Huma, what you have started, you're a financial consultant, you are a digital business transformation consultant as well. These are the services that you provide. So अगर आप जिस स्टेज में थी, let's say 4 years, 4 साल पहले,
and you see yourself now you have clients in Saudi Arabia and overseas, in addition to your services, your market in Pakistan. So now if you want to take, your journey as an example, and you want to guide a tech startup or any startup, what are the steps that they need to initially take, and how they could follow your footsteps? What is the advice that you would give, that if you want, because there, I'm sure you would have grown over the years, right? So what is your motivation level, and what is the steps, the practical steps that you have taken to reach where you are right now? Thank you so much for the question. How I would answer your question is, I would actually tell कि आपने ये जो dots हैं कैसे connect करने हैं. I obviously, as I told you कि 4 years ago when I started, तो मुझे कोई direction पता नहीं थी कि किस direction में जाके startups के साथ काम करना है. So what I started was from a basic financial model, जिसके अंदर हमने ये पूरी चीज़ define की कि एक आइडिया से आपने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, बिजनेस वैल्यू कैसे करना है, उसकी शेयर प्राइसिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टर को पिच करना है तो उसको क्या बताना है कि जी कितने शेयर्स के अगेंस्ट आप हमें कितने पैसे देंगे. और उसके बाद फिर आपने जो आपको अगर फंडिंग मिल जाती है तो आपने बजटिंग कैसे करनी है, और कौन से स्टेज पे यू हैव टू इंश्योर यू स्टार्ट मेकिंग रेवेन्यू. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी है कहीं ना किसी स्टेज पे जाके आपके पैसे खत्म हो जाने हैं, और आपका जो नेक्स्ट इन्वेस्टर है वो तब तक नहीं आना जब तक आपने पैसे बनाने शुरू नहीं करने. सो जो आप कनेक्टिंग डॉट्स की बात करते हैं, ये दो एंगल्स पे काम करता है. एक होता है आपके विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या है जी, आपने अपना बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके डॉट्स कनेक्ट करने हैं. उसमें आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आ जाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाती है, उसमें आपकी मार्केटिंग आ जाती है. उसमें आप सबसे, मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आपने अपना फाइनेंस कैसे प्लान करना है, कौन सी स्टेज पे आपके पास पैसे खत्म होने के चांसेस हैं, उससे पहले कितना अरसा पहले आपने प्लानिंग शुरू करनी है कि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, या आपने अपने एक्सपेंसेस उस तरह से थोड़े कर्टेल करने हैं, या फिर आपने नेक्स्ट इन्वेस्टर कैसे ढूंढने हैं. क्योंकि जैसे ही आपकी फंडिंग खत्म हो जाती है, डेफिनेटली पैसा खत्म होने के बाद आपको पता है क्या होता है कि जो आपके अच्छी खासे सीरियस कंसर्न शुरू हो जाते हैं. सो एक ये जो पहली चीज है जिसके बारे में मैंने बात की, वो है आपकी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने मैक्सिमाइज कैसे करना है अपना जो सिनर्जी कैसे क्रिएट करनी है, और इंश्योर कैसे करना है कि आप मैक्सिमम जो है मिनिमम टाइम के अंदर आप रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करें, और अपना जो है आप सेल्फ रिलायंट हो जाएं. ठीक है. दूसरी चीज आती है कनेक्टिंग डॉट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपने देखना है कौन सी अलायंसेस आपने करनी है, कैसे आपने कस्टमर्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, आपने अपने सप्लायर्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है. सो ये जो पूरा एक बिजनेस चलाने का जो इकोसिस्टम उसको कह लेंगे जी, सप्लायर्स भी चाहिए, आपके कस्टमर्स भी हैं, आपका टेक भी है, आपका एचआर भी है, आपने इन सबको कैसे मैक्सिमाइज करना है, कैसे कनेक्ट करके सिनर्जी क्रिएट करनी है, और आपने अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अटेन करना है. सो मेरा जो भी 4-5 साल का 10-12 स्टार्टअप्स के साथ एक्सपीरियंस है, और ये सारे वो स्टार्टअप्स हैं जो माशाल्लाह सक्सेसफुली रनिंग है और चल रहे हैं, पैसे भी बना रहे हैं. सो आई हैड बीन लकी कि मुझे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो इस एंगल से मिल गया. और व्हाट आई वुड से इज, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जी अगर आप एवरेज नंबर्स देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त मोर देन 12 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, 5 से ज़्यादा एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और तकरीबन मेरे ख्याल में 9+ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स भी चल रहे हैं. उसके लिए मैं ये सिर्फ बात करती हूँ कि एक छोटा सा जो प्रॉब्लम आ जाता है हमारा है वो, फॉर सम रीजन मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है कि जी फाइनेंशियल पोर्शन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, हालांकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन. आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप करना सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपने पैसों को जरूर देखना है, आपका डेबिट क्रेडिट जो है वो मैच जरूर होना चाहिए. और एट द सेम टाइम जब आप अपने डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग जो मैंने मेंशन की, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हुई, दूसरी चीज है आपकी कि आपने जब डॉट्स आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आपने अपने रिस्क कैसे कवर करने होते हैं. फॉर एग्जांपल, आप कनेक्ट डॉट्स के चक्कर में आप अपनी इन्फॉर्मेशन आउट कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल प्लान शेयर करते हैं, आप बिजनेस प्लान अपने आइडियाज शेयर करते हैं, तो आपका वो फिर वही जो बात अभी मेंशन हो रही थी कि लीगल एक्सपर्ट्स की बात हो रही थी, तो जी आपने वो चीज़ देखनी होती है कि आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज भी करना है और उसको मिटिगेट भी करना है. रिस्क लेना तो आपको पड़ता है, बट उसकी मिटिगेशन कैसे की जाएगी, ये प्लानिंग प्रोसेस में आ जाता है. तो मेरे ख्याल से जो हमारे स्टार्टअप्स का प्रॉब्लम है वो यही है कि जी एक तो दे डोंट सीक द राइट मेंटरशिप,
या फिर राइट पीपल, दे डोंट अप्रोच द राइट पीपल। और एक और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये साइलोज में काम कर रहे होते हैं। हर इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो अपने मतलब कोलैबोरेशंस मैंने बहुत कम देखी हैं। और Right. इसके अलावा जो मुझे लगता है वो ये है कि सिनर्जी बिल्कुल क्रिएट की जा सकती है। और 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 एक और चीज़ जो कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं टॉक्स देखती हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन जो शेयर हो रही होती है वो बहुत थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी लेवल पे होती है। हालांकि अगर आप स्टार्टअप्स को देखें तो वो बड़े बेसिक लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होती है या कि जी मैं पहला क्वेश्चन जो मेरे पास कभी कोई स्टार्टअप आता है मैं उनसे पहले सबसे पूछती हूँ, जी आपने पैसे कैसे बनाने हैं, इस आइडिया को मोनेटाइज कैसे करना है, आपका एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल कैसा है, आपको पता है आपकी मार्केट में आपको अगर ये प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं या सर्विस लेके जा रहे हैं तो आपको इतने में आपका बायर अवेलेबल होएगा या खरीद लेगा, या आपका बायर बिल्ड होने में अगले 2 या 3 साल लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 साल पहले जाए तो शायद उबर करीम की मार्केट नहीं थी, लोगों को नहीं पता था कि जी आप ऐसे टैक्सी में ट्रैवल कर सकते हैं, बट नाउ दे हैव मार्केट इवॉल्व हो चुकी है। अब बहुत कंफर्टेबल है कि हम Mhm. मोबाइल ऐप पे कुछ भी बुक कराएं और घर में रिसीव कर लें। पहले थोड़े से हम रिलक्टेंट थे कि जी क्रेडिबिलिटी नहीं थी या कॉन्फिडेंस नहीं था। सो कुछ इस तरह की भी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं जो कि वो टेक सम टाइम, कुछ साल लग जाएंगे हमें अडॉप्ट करने में एज ए ह्यूमंस। अब फॉर एग्जांपल अब ग्रोसरी को जो है आप डिलीवरी जो है वो बड़ी रेयर थी, बहुत कम लोग रिलाई करते थे। एवरीबडी वांटेड, फॉर एग्जांपल इन माय मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं खुद जाके सब्जी पसंद करके खुद देख के तो जो है सब्जी घर लाना पसंद करती हूँ। बट नहीं, जैसे ये लॉकडाउन का पीरियड आया तो हमने देखा कि जी 5-6 महीने हमसे अपने ग्रोसरी डिलीवर करवाई। सो सी, एक वो अडेप्टेशन ऑटोमेटिकली आती जाती है कि जी और वो ऑब्वियसली वो टाइम पे डिपेंडेंट होती है कि जी प्री स्टेज में आपकी मे बी आपकी जो है प्रोडक्ट या सर्विस उसकी फिलहाल मार्केट एग्जिस्ट ना कर रही हो, या आपको Mhm. क्रिएट करनी पड़े मार्केट, या ऑटोमेटिकली वो चीज इवॉल्व हो जाए। सो इस किस्म की बात बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल आपने चीजें हैं वो बहुत बेसिक मेरे ख्याल से मतलब बहुत बेसिक वाली चीजें आप सेल्स पर्सन के हिसाब से सोचें कि जी मैं ये चीज बेचने जा रही हूँ तो कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। मेरे ख्याल में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है जब भी हम कोई स्टार्टअप के लिए बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर बिजनेस एक्सपैंड की बात करते हो, आप स्ट्रैटेजी की बात करते हो, वो थोड़ा सा हाई एंड पे बातें आ जाती हैं, सो ज्यादा पढ़े लिखों वाली बातें होती हैं। सो बेसिक जो पहला काम हमें करना है वो यही करना होता है कि जी बेसिक क्या करना है, पैसे कैसे Sure. बनाने शुरू करने हैं, किसको कितने पैसों पे हायर करना है, पैसे कहाँ से बचाए जा सकते हैं, को ब्रांडिंग कैसे की जा सकती है, किसी और का ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वो कैसे यूज करना है। सो ये यहाँ पे आ जाते हैं जब आप और आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन डॉट्स कनेक्ट कर रहे होते हो। Thank you. Thank you. No, no, very, very valuable information. I think some of the core issues that has been highlighted by Huma, maybe I'll put forward these and I rephrase them as a question to Puram Saab, ke how Jumpstart is addressing some or maybe all of these issues. So, Sharyar, really good points raised by Dishan as well as Homa. One thing I would say, when you actually look at these, the 10x growth, the 10x growth doesn't have